Greetings, students. How are you? I hope you are all fine. Welcome back to our channel, Nagin Best Digital Learning. Now, today, what are we going to do? We are going to do a poem that is the Tale of a Melon City, right? And it is written by Vikram Seth. Okay, children, whom it is written by? It is written by Vikram Seth. Now, children, this is who? This is Vikram Seth, and he is an Indian novelist and poet. Okay, and he has written several novels and poetry books. Now, this person, he was born, Vikram Seth was born on 28th June 1952 in Kolkata. Okay, and now let us just see the overview of the chapter. Okay, and this is the last chapter from the book of Snapshot, children. Okay. Now, children, first of all, let us see the theme of what is in the poem. It is a poem by Vikram Seth in which he mocks any government system. So, his mocking means laughing. The tales age-old customs, right? It talks about old age customs and being proud of beliefs and traditions too simple. Moreover, through the Melon City, the poet represents any nation whose policies are on the basis of superstitions and old age beliefs. Now, what is superstitions? Can you tell me, children? You can write it in the comment, but I'll tell you what is the meaning of superstition. It is the belief that cannot be explained by reason or science. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर माना कि हम ये देखते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो इट इज़ अ सुपरस्टिशियस थिंग, राइट. हाउएवर द किंग इन द पोम इज़ अ पीस लविंग, ठीक है, बट सून वी फाइंड आउट दैट हाउ हॉलो ironic that claims is. Further, the king wants to establish peace by eliminating anyone who committed a trifle of mistakes, right? And we can easily get this by his order of execution of innocent people. Execution मतलब उनका सर काट देना या उनको किसी तरह से मार देना, right? तो हमें कैसे पता चलता है कि वो जस्टिस के बारे में टॉक करता था जब वो किसी भी इनोसेंट पीपल को एक्सिक्यूट कर देता था बाय द एलिमिनेशन हु हैज़ कमिटेड अ ट्रिफल ऑफ मिस्टेक्स. By watching how criminals escape the law and also how people benefit from the nation's policy. और हमें इससे ये पोम के या छोटी सी टेल के थ्रू हमें क्या बताता है कि कैसे एक क्रिमिनल जो होते हैं चिल्ड्रन वो एस्केप करते हैं द लॉ एंड हाउ पीपल बेनिफिट कि अपनी नेशन पॉलिसी से. ओके, हाउ दे एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द नेशन पॉलिसी. नाउ हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. विक्रम सेठ इज़ अमंग मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन नावलिस्ट एंड पोएट. देखो मैंने उनकी पिक्चर भी दिखाई थी ना. He was born on 20th June 1952 in Kolkata to Leah, a court judge, and a Prem Seth, a shoe company executive. He has his roots in Punjab. Roots का मतलब कि वो कहाँ से हैं, पंजाब से हैं. He traveled a lot with his family as a child from Bhatanagar to Dhanpur to London. Seth has experimented with a number of genres in writing. Okay, number of genres in writing, right? Usually the way of writing. Okay, children? He initiated his writing career with poetry. He published the first volume of poetry work in 1980 named Mappings. Okay, तो पहली कब करी थी? 1918 में उन्होंने पहली बार पब्लिश करी थी. और किसने करी थी? मिस्टर विक्रम सेठ. और विक्रम सेठ कौन है? द टेल ऑफ मेलन सिटी के हम क्या बताएंगे? राइटर है, राइट. नाउ कैन वी मूव ऑन टू द टेल. ओके. Okay, see the Tale of Melon City by Vikram Seth. The following poem is taken from Mappings, ठीक है, which was published in 1981 and is included in the collective poems by Vikram Seth. और उन्होंने collected books में collected poems में करा है जिन्होंने किसने लिखा था? विक्रम सेठ.
The king in this poem is just and placid. अब just का मतलब one who does and likes justice, and placid बहुत calm, serene. Does he carry his notion of justice a bit too far, or they are asking you a question? That means वो तुमसे पूछ रहे हैं कि does he carry this notion, his notion of being just, of being placid, कितने फार तक, right? Of justice a bit too far. After Edrisha. Okay, now let us start. In the city of which I sing, तो वो बोल रहा है, in the city of which I sing, there was a just and placid king. Just meaning one who does and likes justice. Placid, calm, who is very calm, right? तो वो बोल रहे हैं in the city of which I sing, ठीक है? और वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? Narrator is narrating this poem about a city whose king favored justice and remained calm, right? Are you understanding? Now, the king proclaimed an ark. The king proclaimed, ordered. What did the king proclaim? He ordered, right? What did he order? An ark should be constructed that triumphantly, okay? And he says that in an ark क्या होता है? इस तरह से होता है, children, right? It is like this, okay? It is an ark. So he's like, the king proclaimed, ordered, an ark should be constructed. This ark should be constructed triumphantly, a sign of mystery. A sign of victory. Not mystery, a sign of victory. और इस आग को क्यों बनाया जाए? क्योंकि एक साइन होगा किस चीज़ के लिए? विक्ट्री के लिए, इस तरह से, ठीक है? सो इन द सिटी विच आई सिंग देयर वाज जस्ट मीन्स जस्टिस करता है जो, राइट? अ प्लेसिड किंग. हु इज अ प्लेसिड? Placid means a person who is actually very calm. The king ordered an ark should be constructed that triumphantly का मतलब क्या होता है, children? Who is a sign of a victory, ठीक है? Next, would span the major thoroughfare to edify spectators there. And then he's like, would span the major thoroughfare. That means the main road, ठीक है? The main road, okay? Got it? To edify spectators there. Edify, improve. Here means improve, okay? Spectators on visitors होते हैं जो देखते हैं, ठीक है? और so he is trying to say the king ordered that a big gate or an ark should be constructed in the city. This will be a symbol of victory. Triumph बोलते हैं ना? This ark was to be constructed on the main road. तभी तो बोलता है would span the major thoroughfare, means ये जो आर्क है वो कहाँ पर बनाना है? वो बनाना है मेन रोड पर, सिटी के. The king thought that it will improve beauty of the city for all the residents and the visitors. To edify means to improve spectators there. ठीक है? इसका मतलब ये देखने के लिए कर रहा है कि this ark will be a symbol of क्या? Triumph, victory. और किसके लिए? लोगों के लिए जो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है? जो रेजिडेंट होंगे, रेजिडेंट जो वहाँ रहते होंगे उस सिटी में, और चिल्ड्रन जो वहाँ के विजिटर्स होंगे, ठीक है? ये क्या है? ये आर्क वो क्या करेगा? उस सिटी को ब्यूटिफाई करेगा, सुंदर बनाएगा, राइट? तो वंस मोर वी गो थ्रू. इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, द नरेटर इज सेइंग कि जो आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ अ सिटी. There was just जो जस्टिस करता था, and placid means calm king.
द किंग प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है ही ऑर्डर्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। एन आर्क कैसे होता है, इस शेप का होता है कि एक दिस आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड वुड स्पैन द मेजर थॉरोफेयर। ठीक है, इसका मतलब ये है इट इज़ द सिंबल ऑफ विक्ट्री। और ये जो आर्क ये मेन रोड पे होना चाहिए, किसके लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए और वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, ताकि ये क्या करे, इट विल इम्प्रूव द ब्यूटी ऑफ द सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, द वर्कमेन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। अब वो बोलते हैं वर्कमैन मीन्स लेबरर्स। Who are the workmen? They are the laborers. ठीक है, who are the workmen? They are the जो काम करते हैं। ठीक है, went and built the things. They did so when he was the since he was the king. अब वो बोल रहे हैं the workers obeyed the orders of the king. They went to the site and constructed the ark. अब वो बोल रहे हैं the workers actually made the आर्क। ठीक है, जो सारे वर्कर्स थे उन्होंने आर्क में आर्क क्यों बनाया था, क्योंकि किसका ऑर्डर था, वहाँ के किंग का ऑर्डर था। द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर टू एडिफाई spectators there. Rode down means walked here. Road means walked, right? Down the thoroughfare means down the main road. Right, he walked to edify. What does edify mean, children? To improve spectators, to see spectators there. तो अब क्या बोल रहे हैं वो, then let's move and then we'll do two more together. See, this is the king. Under the ark he lost his crown, the ark was built too low a frown. And then he says अंडर द आर्क मतलब ये जो आर्क बना हुआ था, ये जो आर्क बना था, अंडर द आर्क इट सेज ही लॉस्ट हिज क्राउन, उसने अपना क्राउन खो दिया, राइट, बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, द हाइट वॉज वेरी लेस, ये जो हाइट होनी चाहिए थी इट वॉज टू लो, राइट, एंड देन अ फ्राउन केम, गुस्से से। Now the workers obeyed the orders of the king. They went to the site and constructed the ark. है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना लेबर्स के बारे में, चिल्ड्रन यहाँ पर, राइट, तो they had to actually see the work of the king, right? उन्होंने माना था किसका, the king wrote down the fair. After it was completed, the king went there to inaugurate it. ठीक है, to see it. Inauguration मतलब जब हम रिबन काट के किसी बोलते कि अब ये यूज़ में आने वाला है। द किंग वॉकड ऑन द मेन रोड एंड थ्रू द आर्क, तो किंग क्या करा, उस आर्क के नीचे निकला, है ना, एंड व्हाट इज एन आर्क, इट इज़ लाइक दिस, तो उस किंग ने क्या करा, उसके नीचे जाने की कोशिश करी। ठीक है, द किंग वॉकड ऑन द मेन रोड एंड थ्रू द आर्क, मेनी रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हैड गैदर्ड देयर टू सी द किंग, और बहुत ज़्यादा जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या करा, दे वर गैदर्ड देयर to see the king. Up, they were happy to see their kings. The crown of the king touched the bottom of the ark because its height was less. The crown fell down and the head of the king. अब क्या हुआ, वो क्राउन गिर गया, क्योंकि हाइट किसकी, आर्क की छोटी थी, तो वो जो क्राउन था वो नीचे गिर गया, राइट, और फिर किंग को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, अ फ्राउन मीन्स गुस्से में, राइट, A frown appeared upon his placid face. Frown means expression of anger. ठीक है, ये देखो यहाँ पर है, frown means expression of anger, right? Now what happens next? A frown appeared upon his placid calm, क्योंकि किंग को तो हमने पहले ही बताया था कि वो क्या है, calm, placid face. Okay, the king said, this is a disgrace. अब किंग ने क्या बोला, दिस इज अ डिसग्रेस, इंसल्ट, डिसग्रेस मीन्स इट्स एन इंसल्ट, राइट। देन what happened? The chief of builders will be hanged. The rope and gallows were arranged. ठीक है, the chief of builders
was to be will be hanged. The rope and gallows were arranged. ठीक है, gallows the structure of hanging a person. कैसे होता है वो structure? I'll show you. See what happens. What is a gallow? एक देखो ऐसा होता है structure, and then what do you call it? Rope is there. So here the person is hanged. The chief of builders was led out. Brought. He passed the king. He gave a shout. He gave a shout. ठीक है, अब then what did he say? Oh king, it was the workman's fault. Oh, said the king and called a halt. अब क्या होता है, अंडर द आर्क को क्या गिर गया, उसका क्राउन गिर गया, तो वो तो बहुत बेइज्जती वाली इंसल्ट वाली बात हो गई. ठीक है, तो ही सेज अ फ्राउन, गुस्से में, appeared on a placid face, उसके calm face में. The king said, this is a disgrace, it is an insult. The chief of builders, ठीक है, जो head होगा builders का, will be hanged. The rope and gallows were arranged. rope जिससे किसको hang करेंगे, chief of builders को hang करेंगे. और वो कौन सा एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसको गैलो बोलते हैं, राइट? इट इज लाइक दिस. ओके चिल्ड्रन, द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट. ही पास द किंग. ही गेव अ शाउट एंड देन पास द किंग मीन्स केम बिफोर द किंग, एंड उसने कुछ बोला. सो द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर अपीयर्ड ऑन द फेस ऑफ द किंग. The king said that it was an insult to him that his crown had fallen. He ordered that the chief builder should be hanged. Structure for hanging was made and a rope was tied to it. The chief builder was brought before the king. The chief builder said that it was not his fault. The workmen who had constructed it properly. तो chief builder बोलता है मैंने थोड़ी क्या है जो कंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने बुलाया है. तो उन्होंने बोला है, ओह, said the king. Oh king, it was workers' fault. Oh, said the king and called a halt. Halt का मतलब क्या होता है, stop. कि उसको अभी हम क्या करते हैं, hang नहीं करते, just stop it, right? Just right now stop it. To the proceedings being just. अब वो बोलता है to the proceedings being just and placider. Now he said, I must have all the workmen hanged instead. The workmen looked surprised and said, Oh king, you do not realize the bricks were made of the wrong size. Proceedings. अब क्या हुआ, उनको जिन्होंने जो कंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने उनको बुलाया. क्यों बुलाया? क्योंकि जो चीफमैन थे उसने बोला कि मेरी क्या गलती है, जो जिन्होंने बनाया उनकी गलती है. ठीक है, तो तब तक उसको बोला रुक जाओ. हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड. अब वो जो किंग बोलता है कि जो सारे के सारे वर्कमैन है ना उनको हम क्या करेंगे, हैंग करेंगे. ठीक है, द वर्कमैन लुक सरप्राइज्ड एंड सेड. अब सारे के सारे वर्कमैन सरप्राइज, एक दूसरे की शक्ल देखने. ओह किंग, यू डू नॉट रियलाइज. अब किंग को बोलते हैं आपको रियलाइज नहीं हो रहा है. द ब्रिक वॉज मेड ऑफ द रॉन्ग साइज. अब वो बोलते हैं जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो क्या होती है, रॉन्ग साइज की बनी हुई थी. ठीक है, नाउ द किंग ऑर्डर टू स्टॉप हैंगिंग ऑफ द चीफ ऑफ बिल्डर्स. He believed in justice. His face had become more calm now. He ordered that instead of chief builder, all the workers should be hanged. The workmen were surprised at this new order. They requested the king to listen to their plea. Plea means dukh. तुम कम से कम सुनो तो. They said the mason had made the bricks of wrong size. तो उन्होंने बोला कि जो ईंटें थी वो तो छोटी साइज की बनी थी, तो उसमें हमारी क्या गलती है, राइट? Summon the masons, said the king. अब बोलते हैं summon means to call, to order, कि मेरे सामने लेके आओ. किसको? मेसन को. The mason stood there quivering, shivering, ठीक है, trembling. It was architect, they said. अब बोलते हैं, देखो एक दूसरे पे डाल रहे ना सारा का सारा. The king orders to call mason. अब summon the mason मतलब to call या call the mason, said the king. The mason stood there quivering means shaking. अब फिर डर के मारे मेसन आता है, वो
ट्रेम्बल, कांपने लग जाता है. इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड. अब उसने बोला कि कौन था? आर्किटेक्ट था, जिसने स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था. दे सेड. So the king orders to call mason. The mason came and stood in front of the king. They were trembling because of fear. They said that they did not make any mistake. It was the fault of the architect. और अब वो बोलते हैं कि it was the fault of the architect. अब देखते हैं architect के साथ क्या हुआ, right? It was the architect, they said. The architect was summoned. The architect was summoned. मतलब अब architect आ गया. Well, architect said, His Majesty, I do ordain that you shall be hanged, said the architect. O king, you have forgotten one small thing. You made certain amendments to the plan when I showed them to you. ठीक है. Then he says the architect summoned. The architect अब summon मतलब आ गया. ठीक है. And he says, well, architect, said His Majesty, I do ordain that you shall be hanged. अब वो बोलता है, किंग बोलता है कि well, architect, said the majesty मतलब किंग ने बोला. said the majesty मतलब किंग ने बोला. क्या बोला? well, architect, I do ordain. ordain means order. ordain means order that you shall be hanged. अब तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे ये फांसी, तुझको ये फांसी लगवा देंगे. said the architect. अब आर्किटेक्ट ने बोला, ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग. अब आर्किटेक्ट ने बोला, ओ किंग, आप तो भूल गए कुछ एक छोटी चीज़ भी आप भी भूल गए. यू मेड सर्टन अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस. पर आपको तो मैंने डिज़ाइन दिखाया था, ठीक है, टू द प्लान व्हेन आई शो देम टू यू. ठीक है, टू द प्लान. प्लान मीन्स डिज़ाइन. ठीक है, मैंने तो आपको सारे की सारी डिज़ाइन दिखाई थी. आई शो देम टू यू. द king ordered that the architect should be hanged. The architect reminded one small thing to the king, that he said that the king had made some changes in the design made by him. तो अब पूरी की पूरी बात किस पे आ गई चिल्ड्रन? किंग पे आ गई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हुआ? द किंग हर्ड दिस. ठीक है, अब किंग शॉक हो गए. द किंग सॉ रेड. किंग सॉ रेड मतलब किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. ठीक है, द किंग सॉ रेड मीन्स बिकेम वेरी एंग्री. ही बिकेम वेरी एंग्री. ठीक है, सडनली ही बिकेम वेरी एंग्री. इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड. एंड ही लॉस्ट हिज हेड मतलब अब ना, ही गॉट वेरी एंग्री. गुस्से में हो जाते ना पागल. ठीक है, एंड एक्चुअली बिकेम अपसेट दैट ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज काम. जस्ट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ही सेड. और क्योंकि he was just मतलब, just का मतलब he was very justice, who followed a lot of justice, and placid मतलब जो बहुत काम रहता है. he said this is a tricky thing. tricky बहुत complicated, not easy to decide. ठीक है, here is tricky, which is not easy to decide means complicated, right? So he says this is a very complicated case, right? I need some counsel. Bring to me the wisest man in the country. And now he said, counsel को बोलते हैं. I need some counsel. He said that I need some advisory, right? What did he say? That he needs some advisory. Bring to me the wisest man in the country. तो बोलते हैं कि मुझे किसी की एडवाइस चाहिए. कौन लेके आओ? सबसे वाइज मैन लेके आओ. कहाँ से? कंट्री में, right? Okay, children? Right, then he says I need some counsel, bring to me the wisest man in the country. अब वो बोलता है प्लीज कॉल द वाइजेस्ट पर्सन टू अ कंट्री, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रह गया. The wisest man was found and brought. Nay means rather, carried to the royal court. अब कौन लेके आया गया? The wisest man. ठीक है, अब कौन सा सबसे wisest man कहाँ लेके आएगी? कोर्ट में लेके आएगा. Nay, carried to the royal court. Nay means rather. Where is nay? It is here. And rather, he was carried to the royal court. He could not walk and could not see. So old and therefore wise was he. ठीक है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था. ठीक है, और he could not walk
and could not see. तो अब वो बोलते वो देख भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सबसे ओल्ड था। तो सब सोचते थे कि ही इज़ दी वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्सन, ही इज़ वन ऑफ द व्हाट यू कॉल इट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स. But in a quivering voice he said, quivering means trembling, quivering, very trembling, shaking voice, he said, the culprit must be punished. अब वो बोलता है जिसने culprit मतलब defaulter, जिसने गड़बड़ करी है, must be punished. Truly, the ark it was that banged, and he says it was the ark it was that banged the crown off and it must be hanged. And he says bang means collided, ठीक है, वो ark it was that banged the crown off and must be hanged. And he's like whoever did it must be hanged. Now the wisest man of the country was found and brought before the king in the royal court. Actually, he was very weak. He could neither walk nor see. So he had to be carried to the royal court, or he was carried to the royal court, and he was considered the wise person because he was the oldest person, है ना, क्योंकि वो सबसे बूढ़े थे. He said in a trembling voice, ठीक है, that the culprit must be hanged. जिसने भी ये करा है, he must be hanged. Actually, the ark had struck against the head of the king, so the ark should be hanged. ठीक है. Now next, to the scaffold. Scaffold means platform of hanging someone. ठीक है, platform of hanging someone. ठीक है, platform of hanging someone. Platform of hanging someone. The ark was led when suddenly our counselor said, how can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty? ठीक है. Then true, mused the king. By now the crowd, restless, was muttering aloud. अब क्या हुआ? A platform was hanging of the ark was made, and the ark was brought up to platform. Suddenly one of the ministers said that we should not hang the ark. It has touched the head of the king. Thus it was a blessed, it has blessed the king, है ना. तो उसने बोला कि आग को क्यों हैंग करें. ठीक है, उस आग ने तो हमारे किंग के उसको क्राउन्स को टच करके ब्लेस ही करा है. ठीक है, इट इज़ अ ब्लेस्ड. द किंग केयरफुली थॉट अबाउट इट. इन द मीन टाइम द क्राउड हैड बिकम इम्पेशेंट. ठीक है, वो एक दूसरे से बात करने लग गए, क्योंकि रेस्टलिंग बोले ना, रेस्टलेस बोल रखा है, राइट. तो इट बिकेम इम्पेशेंट. एवरीवन वाज टॉकिंग स्लोली बट कलेक्टिवली देयर वॉइस हैड बिकम लाउड. और हल्के हल्के एक दूसरे से मटरिंग कर रहे थे. मटरिंग मीन्स टॉकिंग, बट एक्चुअली दे वर टॉकिंग. मटरिंग केम अलाउड, राइट. द किंग, then it says the king perceived they moved and trembled and said to all who were assembled, let us postpone consideration. One finer points like guilt. The nation wants a hanging. Hanged must be someone, and that immediately. अब क्या बोलते हैं? Now what is it saying? The king understood the mood of the crowd and it wanted the culprit to be hanged, है ना. अब सबका ये, क्योंकि मटरिंग होने लग गई थी, जोर जोर से लोग बोलने लग गए थे कि ऐसे कैसे. ठीक है, तो कोई तो कल्प्रिट हैंग होगा. द किंग बिकेम एक्साइटेड एंड इक्वली ईगर. ठीक है, और to all the people who had gathered there, he said that we should postpone the minor aspect of finding out the guilt. कि हम ये चीज़ें हमको अभी postpone करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा who was at fault. The country wants that somebody should be hanged, so we must immediately hang someone. ठीक है, क्योंकि गलती तो हुई है. The noose and then was set up somewhat high. Each man was measured by and by. But only one man was so tall he fitted one man, that was all. He was the king. His majesty was therefore hanged by royal decree. ठीक है, अब noose means
what does here noose mean? Noose means the rope for hanging someone, right? Within the short period of time. Decree, order. Royal decree matlab order by the king. Ab a rope was put up to the platform, है ना? वो जो गैलो होता है उस पे क्या बना है? Put. It was set up a bit high. तो थोड़ा ऊपर तक उसकी हाइट को लेकर उसको करा. Each person present there come to the nose to measure one's height. और वहाँ पर नोज पे अपना क्या करेगा? मेजर करेगा. बट हाइट ऑफ ओनली वन पर्सन वॉज फाउंड टू बी इक्वल दैट ऑफ द नोज. और उस जो नोज था, नोज मतलब द रोप फॉर हैंगिंग, उसमें सिर्फ एक ही इंसान फिट करता था और वो था किंग हिमसेल्फ. देयरफॉर एज पर द ऑर्डर किंग ऑफ द कंट्री ही वॉज हैंग्ड. और रॉयल डिक्री के अकॉर्डिंगली, ठीक है, किसको मार दिया गया? किंग को, क्योंकि उसके रस्सी के अकॉर्डिंगली कौन था? किंग था, ठीक है, जो वो हैंग कर सकता था. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट. थैंक गुडनेस वी फाउंड समबडी सेड. अब उसने बोला थैंक गॉड हमने किसी को तो ढूंढा. द मिनिस्टर्स फॉर इफ इंस्टेड we had not, the unruly town might well have turned against the crown. Long live the king, said the ministers. Long live the king. The king is dead. Unruly means agitated. Thank goodness we found somebody, said the ministers. For if instead we had not, the unruly town means agitated town. अब वो बोल रहे हैं might well have turned against the crowd. अब the ministers thanked themselves that they could find a person who hang. Otherwise the agitated people of the town, जो गुस्से थे, would have revolted against the king, कि किंग ने किसी को नहीं टांगा. तो सब क्या करते? रिवोल्ट करते कि क्या है, किंग ने किसी को नहीं क्या करा? हैंग किया. ठीक है. दे सेड दैट मे द किंग लिव फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है. दे अगेन सेड मे द किंग लिव फॉर लॉन्ग एंड द किंग इज डेड. अब कैसे वो जल्द, देखो इसमें अगेन क्या है? इट्स अ आयरनी, है ना? आयरनी क्यों बोलते हैं? लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, है ना? तो आयरनी. दे pondered the dilemma then, being practical minded men, sent out to the heralds to proclaim in his former majesty name. ठीक है. Now former majesty's name. The next to pass the city gate will choose the ruler of your state. As is our custom, there will be enforced with due ceremony. Dilemma, situation. अब एक प्रॉब्लम आ गई. अब क्या प्रॉब्लम आई है कि इस कंट्री को रूल कौन करेगा, या इस सिटी को रूल कौन करेगा. दे पॉन्डर्ड. ठीक है. नाउ द मिनिस्टर्स थॉट अबाउट द डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द किंग. अब तो किंग थे, वो तो मर गया. अब देर वर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन्स. अब उन्होंने सोचा अब करना क्या है. दे क्विकली थॉट ऑफ अ सोल्यूशन. ठीक है, कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा. दे सेंट अ मैसेजर टू मूव अराउंड द कंट्री. इफ द ऑर्डर्स ऑफ द फॉर्मर किंग, दे वर ऑर्डर्ड टू मेक एन अनाउंसमेंट इन द पब्लिक. The order was that the first person to enter the city will be selected the king of the melon. This was the custom of the city. The order further declared that a new person will be made king for the big ceremony. अब देखते हैं, right? As is our custom, there will be enforced with due ceremony, है ना? Right children? अब देखने हैं कि next king कौन बनेगा. A man passed by the city gate. An idiot. The guards cried, wait. Who is to be the king? Decide. A melon, the idiot replied. अब उन्होंने क्या बोला था कि जो इस आग के नीचे से पास होगा वो क्या वो ही डिसाइड करेगा कि किंग कौन बनेगा नेक्स्ट. ठीक है. एज पर द रॉयल डिक्री कौन बनेगा किंग. ठीक है. देन A man passed by the city gate, an idiot. The guards cried, wait. अब कौन पास हुआ? An idiot. ठीक है. तो a man crossed the gate of the city to enter into the city and he was a fool. Idiot means fool. The guards cried, wait. Who is to be the king? Decide. अब उसको ही पूछते हैं क्योंकि उसने पास कर रहा है. The guards stopped him. They asked him,
Who should become the king of this city? A melon, the idiot replied. और क्योंकि उसको मेलन पसंद थे, उसका मुंह पे सिर्फ ये, the man replied, a melon. ठीक है, this was a standard answer to all the question. He liked melons. तो वो बोलता है ये इसका स्टैंडर्ड आंसर था, बिकॉज ही लाइक्ड melons, राइट. You are now our king, the ministers said, crowning a melon. They carried the melon to the throne and reverently set it down. What is reverently? With lot of respect. ठीक है, they set it down mean the minister told the melon, ठीक है, that it was their new king. They put the crown on it. The ministers, with lot of respect, carried the melon to the throne. They put it on it, right? Then this happened years and years ago. When now you ask the people so, your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice. In his majesty rejoice. अब क्या बोलते हैं, दिस इवेंट स्टोरी हैड अकर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो. और ये सारा चीज़ पहले, बहुत पहले हो गया था. years and years ago मीन many years ago. ठीक है, many outsiders ask people of the town why a melon is their king. और बहुत सारे लोग उसको पूछते हैं कि क्यों, why is the melon your king. How did a melon become your king? They reply that it is because of the custom of the town to choose a king. क्योंकि कस्टम क्या था कि कोई भी इंसान वहाँ पर किंग चूज कर लेता है. बट अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या करा कि जो उस आँख के नीचे से पास करेगा वही डिसाइड करेगा. तो आँख के नीचे से कौन पास किया चिल्ड्रन? Whom did it pass? Who passed? An idiot and fool. क्योंकि उसको मेलन पसंद थे तो उसने मेलन ही बोला. The customs was decided by our king. और वो बोलते हैं कि this custom in his majesty rejoice means be happy. ठीक है, and this all custom is decided by our king. So who has decided? A king who has decided, their king has decided that whoever chooses the city will choose the king, right? Now this is the mock on the system of government, है ना. Now see, they are mocking like this through a picture, right? That a melon is being crowned. ठीक है, how will he give his verdicts? How will he choose? What words will he choose? Now let us go to the somewhat last lines of this poem. Now they say, in being a melon, that's okay. ठीक है, with us, for who are we to say what we should to be as long as he leaves us a peace and liberty. Liberty here means freedom, right? Liberty means freedom. The principle of laissez-faire not considered except whatever is having. ठीक है, the principle of laissez-faire का मतलब क्या होता है children? With you accept whatever is happening. You accept whatever is happening, right? You accept whatever is happening. Seems to be well established there. ठीक है, and everybody enjoys whatever is being established there. The people said they are okay if their king is a melon. ठीक है, जब पूछा गया और लोगों से तो they were okay. If being a melon, that's okay. With us, for who are we to say? और बोलते we are not bothered who is our king, because who are they to say? Okay, if we are not troubled and our freedom is not disturbed, and then they say that what he should be as long as he lives in peace. कि हमको क्या करें, हमको ये चीज़ें ट्रबल ना करें, हमको ये चीज़ें परेशान ना करें. As long as we are in peace and liberty. पीस एंड लिबर्टी का मतलब हम पीस में है, फ्रीडम में है, हमारी फ्रीडम को डिस्टर्ब नहीं किया गया. द
The principle of accepting what had happened was in the mind of the people. The principle of laissez-faire seemed to be well established there, accepting whatever has happened in the mind of the people. Okay, I hope children you got the whole poem easily, because it's an easy language and I've made you write all the meanings. Okay children, I hope you could understand uh, the poem or the tale properly. I'll share a PDF also. Thank you children, thank you very much. Please like, share and comment. Okay children.